Jai Sri Ram. Welcome everybody. Welcome Dr. Adityanjee. Thank you for joining Bharat Marg. बहुत बहुत स्वागत है आपके लिए. आदित्यन जी से आज बातचीत होगा दोस्तों पीओके के बारे में. ओके, पीओके के बारे में इसमें कुछ गहरी बात होने वाला है. सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाला है, तो आप जरूर जुड़िएगा. और कोई आपका तरफ से सवाल है तो भी बताइए, क्योंकि अभी अभी सीएम योगी ने बोले कि पीओके हमारा होगा मोदी जी का थर्ड टाइम में. हमारा मेन मुद्दा है, ये है आदित्य जी से कि डॉक्टर साहब ये क्या है, मोदी जी का और एक जुमला है या सच है, इसी के बारे में बात होगा दोस्तों. बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, make sure to like the video, comment on the video, share the video with as many people as you can, folks, because we need your help in reaching out to home to home to home and spread our dharma. Okay, and also we do teach Sanskrit for free. अगर आपको चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं व्हाट्सएप भेज के. एंड ऑल्सो वी टेक तीर्थ यात्रा ट्रिप अराउंड भारत. ओके, फॉर सीनियर सिटीजन, स्पेशल नीड, फॉर इट्स अ प्राइवेट लग्जरी ट्रिप. अगर चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं. अगर आपको गौदान करना है या रिसीव करना है, अगर आपको गौदान चाहिए या देना है, दोनों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं. हमारा बहुत सारा काम होता है दोस्तों, जैसा गौदान, गौ सेवा, अन्नदान, ओके, हवन, पूजा एक्सेट्रा. और इसके अलावा हमारा हर दिन का एक धार्मिक मैसेज भी आती है, उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस में आते हैं. उसको पाने के लिए यू कैन जस्ट सेंड अस अ मैसेज टू +16479644790 and subscribe to our one dharmic message a day. And don't forget folks, we need your support in sharing the video, and also friends, we need your support uh, in with the dan. Okay, we need your support with dan folks. Okay, for keep doing the work. ओके, वी फॉर टू डू द प्रचार. अगर आपको अच्छा लगा हमारा काम, प्लीज हमें दान दें कि ताकि हमारा काम आगे बढ़ते रहें. ओके, जय श्री राम डॉक्टर साहब. वेलकम वेलकम वेलकम. आपका हार्दिक धन्यवाद भारत मंच पे मुझे निमंत्रण देने का. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ये बहुत बहुत हमारा खुशी की बात है. आप जैसा जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं जो आके हमारा शो में संबोधित करते हैं, मींस वी आर वेरी ब्लेस्ड. ओके, एंड ये बोलिए डॉक्टर साहब कि बहुत पीओके के बारे में बात हो रहा है अभी. ओके, अब रिसेंटली, ओके, योगी जी यूपी का सीएम बोले कि सीएम योगी claims big claim on Modi. POK, okay, POK will become the part of Bharat within Modi's third term. Is it reality या जुमला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहूंगा. हाँ जी. कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान भारत के अभिन्न अंग हैं, अभी भी हैं. सही है. अगर वो दुश्मन के कब्जे में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का हिस्सा नहीं है. POK, POL and Gilgit and Baltistan are de jure by law parts of Union of India, legally per our constitution, per the instrument of accession. It is a different issue altogether that an enemy nation is illegally occupying those territories. मतलब आज तो हम जा नहीं पाएंगे ना उधर. हम जा नहीं पाएंगे, but we should not be saying POK will be part of Bharat. POK is already part of Bharat. This is the misconception I want to sort out first. Absolutely. That legally POK, POL, Gilgit, Baltistan are part of Bharat as per the instrument of accession signed by Maharaja of Unified State of Jammu and Kashmir in 1948. Hanji. So, issue is that when do we reverse this adverse possession? So there are different ways of
dealing with adverse possession. One is legal, that has not worked. It was wrong on part of the Prime Minister at that point in time to take it to United Nations, hoping that it will help, but Yeah, he didn't want it to be helped. वो yeah, भी he हो सकता है. did not have the foresight that what will happen. I think we need also to realize that British people played a game with India, that while Lord Mountbatten was the Governor General of Dominion of India post August 1947, a British Army officer was engineering rebellion in Gilgit and Baltistan, which is part of the entire state of Jammu and Kashmir. And because of treachery of this army officer, I think Major Brown or something like that, Gilgit and Baltistan came under Pakistani control. And that tells you about the imperial machinations of the British Empire. That on one hand, you had your last viceroy appointed as Governor General of Dominion of India. ये तो गलती भारत की है ना, वो तो वाइसराय नहीं था पाकिस्तान के लिए. हाँ, वो नहीं था, ये भारत की गलती है. भारत के जो शासक थे, के लिए वो गोरे क्या करेंगे भाई साहब? नहीं, लेकिन वो भी तो अपना खेल खेल रहे थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर विदाउट नॉलेज ऑफ हिज सुपीरियर इज अरेंजिंग ए रिबेलियन. मेरा कहने का मतलब है कि खेलने के लिए हम भी तो मैदान दिए. We were there. We know all the problems we had with our first or second prime minister. But we are facing these problems, and these problems should have been sorted out historically much earlier. There was no need to return 93,000 prisoners of war. That was a bargaining chip at any point in time. So we lost a number of opportunities, to take the possession back of illegally occupied territories of Bharat. बिल्कुल. Part of state of Jammu and Kashmir. मैं मान लिया डॉक्टर साहब, मैं मान लिया आपका बात, मगर आप तो बोलते हैं अभी राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है, 10 साल तो हो ही गया, अब क्या आएगा या नहीं आएगा? देखिए, बात यह है कि मैं इसमें टाइमलाइन नहीं दूंगा ना, और उसका कारण है, आप अपने शत्रु को पहले से चेतावनी नहीं दीजिए ताकि वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए. अगर आपको कुछ करना है तो आप कीजिए, अपने कार्यकाल में कीजिए, अपनी समय सूची पे कीजिए. किंतु इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि हम एक लाउड स्पीकर पे उस पे अनाउंसमेंट करें कि हम पहले 100 दिन में करेंगे. उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं चेतावनी दे रहे, आप चीन को भी चेतावनी दे रहे हैं, आप अमेरिका को भी चेतावनी दे रहे हैं, और इसमें लोग बाधा डाल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो कूटनीति तो यही कहती है कि जो अगर आपने काम करना है कीजिए, जो उद्देश्य है वो करना चाहिए. बिल्कुल. लेकिन उसकी सूचना पहले से नहीं देनी चाहिए. Absolutely, I agree with you. मगर मेरा एक सवाल है, आजकल you hear lot of rebellion going on inside POK. ये क्या रा का हाथ में है, हाथ है इसमें, आपका क्या राय है? नहीं, इसका कोई ऐसी बात नहीं है. गिलगिट बाल्टिस्तान में काफी समय से, पिछले 2 साल से काफी आंदोलन चल रहे हैं. वहां की जनता का काफी आक्रोश है पाकिस्तानी सरकार के ऊपर, और उसके कई कारण हैं. पाकिस्तान ने धीरे धीरे गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने एक प्रोविंस का दर्जा दे दिया है,
एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा ली हैं, तो पाकिस्तानी वहां जाके जमीन खरीद सकते हैं, और वहां पे उन्होंने पीएलए को पूरी छुट्टी दे दी है मिनरल एक्सप्लॉइट करने की। जब वहां की जनता को जो गेहूं था वो सस्ते दर पे मिलता था, उसके धीरे धीरे मूल्य बढ़ा दिए, और वहां पे जल विद्युत का उत्पादन काफी होता है, लेकिन वहां पे 24 में से 22 घंटे अगर आपके पास पावर कट हो रहा हो तो जनता को परेशानी होती है। तो वहां की जनता पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध खड़ी हुई है, और वहां पे पिछले 2 साल से प्रदर्शन होते रहते हैं। और उन प्रदर्शनों में लोगों ने बड़ी ऊंची आवाज से ये कहा है कि अगर आप हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो हम यहाँ से एक मार्च ऑर्गेनाइज करेंगे स्कार्डू से कारगिल तक। कारगिल इस समय भारत के पास है। कहने का तात्पर्य ये है कि वहां की जो जनता है गिलगिट बाल्टिस्तान की, करीब 2 मिलियन के लगभग है इस समय, वो कह रहे हैं कि हम भारत से विलय कर लेंगे। और उसमें एक धर्मांतरण का कारण भी है। गिलगिट बाल्टिस्तान की जनता शिया संप्रदाय से है, और पाकिस्तान एक सुन्नी देश है, और अगर पाकिस्तानी वहां जाके अपने घर बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, उसका ये उद्देश्य है कि वहां पे डेमोग्राफिक चेंज किया जाए। बिल्कुल। और इस बात से वहां की जनता काफी क्रोधित है, काफी आक्रोश में है पाकिस्तानी सरकार। वो उन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस में मेमोरेंडम भी दिया है। बिल्कुल। गिलगिट बाल्टिस्तान और उसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान को भगाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को, ये कहा है उन्होंने अपना जो मेमोरेंडम यूनाइटेड दिया नेशन था। इज अ बोनलेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ बोनलेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जन साधारण में कितना आक्रोश है कि ये लोग भी मुस्लिम हैं, और पाकिस्तान जो मुस्लिम उम्मा का एक आका समझता है अपने आप को, उसके विरुद्ध ये मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हाँ ओके, जी। लेट्स कम टू यू स्ट्राइट। ओके, क्या जैसा एज अ भारतीय, do I even want POK to get attached to Bharat? Okay, I'll say why. Let me explain you why. My question. Okay, अगर POK भारत के साथ लीगली ऑफिशियली जुड़ गया तो ये सारे राक्षस मेरे घर के पास आने जाने को चालू हो जाएंगे। ओके, मगर हम तो उधर नहीं जा पाएंगे। वी कैनॉट गो देयर, बट दे विल हैव एक्सेस टू होल भारत। एंड इसके बारे में मोहन भागवत जी एक बार बोले, डॉक्टर साहब, वो बोले कि we don't need POK if they want POK people wanted to get attached to Bharat. Okay, उनको घर वापसी करके उनका जो भूल है पहले का उसके लिए माफी मांग के आना चाहिए, नहीं तो हमें ऐसा नहीं चाहिए बोल के। इसमें भी आपका राय रखिएगा। मेरा राय है ये है कि पीओके तथा पीओएल पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड लद्दाख दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं। सही है। और वहां के निवासियों को यह अधिकार है कि वो भारत के नागरिक की हर सुविधा को प्राप्त करें, और अगर वो एडवर्स पोजेशन खत्म किया जाता है तो वहां पे भी एक ही संविधान होगा। अब धारा 370 तो है नहीं, तो क्योंकि धारा 370 नहीं है, इसलिए हर एक भारतीय नागरिक को ये अधिकार होगा
कि वो उस जगह जाके जमीन खरीद सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, रह क्या सकते हैं। आप खरीदना चाहेंगे क्या पीओके में जाके? देखिए उसका वो सामरिक, तो चाहेंगे कि आपका घर के पास में आ जाए, मगर देखिए आप चाहेंगे क्या उधर जाने का? उसका सामरिक महत्व है। हम्म, अगर हमारे पास वहां पे अपना आधिपत्य नहीं है तो हम सेंट्रल एशिया से लैंड कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। गिलगित और बाल्टिस्तान का एक जो लैंड बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से है। हम्म, पाकिस्तान हमें लैंड राइट्स नहीं देता, लैंड कनेक्टिविटी राइट्स। उसकी वजह से भारत का व्यापार सेंट्रल एशिया के राष्ट्रों से नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना पड़ रहा है इस समय? हमें जो भी सामान भेजना है वो कांडला पोर्ट है गुजरात में या मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में, वहां से चाबार पोर्ट में जो हमने बनाने में मदद की है, ईरान, वहां जाता है। वहां से फिर रोड के जरिए वो अफगानिस्तान जाता है, या वहां से आईएनटीसी जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर उसके द्वारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाता है या रशिया में जाता है। तो जो आपके राष्ट्र का हिस्सा है और उससे आपको सेंट्रल एशिया में लैंड कनेक्टिविटी हो सकती है, आप क्यों बेकार की बातों में उलझ रहे हैं? जो हमें करना होगा वो कर लेंगे जब but वो हमारे what do you think about Mohan Bhagwat ji, RSS Sarsang Jalak Mohan Bhagwat ji was saying, if they want to come, they have to apologize and become do garvapsi and then come. Otherwise, we don't need it. I think we should not put conditionalities. That is my personal view. I have all respect for Mohanji, but being leader of a cultural organization does not mean having expertise in strategic affairs. And I'm speaking from a strategic point of view, very cold-blooded strategic point of view. बिल्कुल बिल्कुल You have बिल्कुल multiple enemies here sitting, and you have been cornered from all the sides. बिल्कुल. You have to see long-term threats. India cannot be shrinking perpetually. But will you get loyalty from these folks, or they will behave attacking everywhere in India? Either उधर उनको access मिल जाएगा. What do you see? Just see from a common perspective, common man perspective. Managing them is part of the nation and government of the nation. And I don't think it is all that difficult. I will not say it on public platform what needs to be done, but yes, it's a very manageable, it's a very sparsely populated area. 2015, the population was 1.69 million. You need to understand what is the demographic proportion of minorities in India. If we are managing that, managing 1.69 people is not a million people is not a problem. So let's not put artificial barriers for safeguarding India's strategic interests. And it is a very calculated point I'm making. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप, yeah, so you believe that what Yogi ji is saying is true, because it is a big election bullet point now. Well, I will not say yes, I will not say no. It's a very popular saying. You never hang bones on your neck, Right, to tell the world that you are a meat eater. Have you ever seen a lion going around with the bones around its neck? The lion will do what lion wants to do. Let the Lion of India do what the Lion of India, without any forewarning, without any time for the adversaries to prepare. but what will happen to these politicians who are running business on it from the west? POK jana udhar jaake inka, give the blessings to them, become the part of them, like the gore politician. What will happen to them? Those politicians, even in
Union territory of Jammu and Kashmir are also getting discredited. Since 2019, after the abrogation of Article 370 and removal of Article 35A, there has been a ground change in the local population compared to what it was. The young people, the young folk are realizing that their destiny lies with India. And they are already getting the benefit of good education, jobs, opportunity to participate in sports, culture, as part of a pan-Indian nation. Absolutely. And they are realizing that it is not in their benefit, because what was happening, that under the garb of this inciting the youngsters to throw stones, young boys were being recruited to become terrorists, and the average life of an on-ground terrorist was 3 months. So you are playing with your life. And what was happening with the young women? They were being sexually exploited by these terrorists. It is an untold story of daughters of Jammu and Kashmir. No, it happened in Pakistan too with the Khalistanis, Yes, yes, Bhindranwale time and beyond. yes. So the local population in Union Territory of Jammu and Kashmir, barring the PDP and NC politicians and some hardcore militants, there is a ground change in opinion if you talk to the common man. Okay. So, we are talking about now. Let's come to Gilgit and Gilgit, Pakistan, and the other areas. How the people are feeling the heat there? Why they want all of a sudden so much uprise in joining with India? They say open the gate and we will get into Bharat. Yes, because they also see the game plan. Pakistan considers, or the elites of Pakistan consider this just as a colony, just like they are exploiting Balochistan mineral wealth. Means let's put it the Punjabi rule the Pakistan. Yeah, so the Pakistani elite, whether it is the Pakistani army or political establishment, they are just using it as a colony. The area has some natural resources. There's a lot of electricity being produced using the hydroelectric power, but they have given actually full, carte blanche to Chinese there, to exploit the mineral wealth and all that sort of thing. So also you may also realize that it is not just POK and POL we need to be talking about. We also need to take COL, China occupied Ladakh, Yes, pointing towards Aksaichen part of Ladakh. And I am also talking about the Sakshkam Valley that was illegally ceded by Pakistan to Communist China in 1963. So we have a lot of work to do. And but I don't think that we should put artificial barriers. Our parliament had a resolution passed that entire state of Jammu and Kashmir belongs to India. Whatever parts are under adverse possession, it's only a temporary phase. The Union of India, the government of India, the people of India are duty bound to reclaim that adverse possession. The only thing is that the people who are in important positions in political power now have the spine to say this openly, whereas previous government did not have that spine. absolutely. My question to you on this is POK का लेने का मतलब है डॉक्टर साहब चाइना से पंगा लेना ये हो पाएगा क्या क्यों नहीं हो मतलब पाएगा? ये एक तरफ चाइना दूसरा तरफ the west which is acting like your friend but doing all the work from the back you know And that's why I told you that there is no need to declare when we will do it. There was a Chinese politician by name Deng. Mhm.
He said, hide your strength and bide for the time. Right. Absolutely, absolutely. तो सिंध का क्या होगा? What will happen to Sindh? देखिए, पाकिस्तान is an artificially contrived nation. It is a transitory state. It may not last very long. Essentially, what is happening that one dominant province is exploiting Controlling the entire country. Yeah. entire country. And Punjabi flow. Let's. Punjabi elite is exploiting people of Sindh, exploiting mineral resources in Baluchistan. They've given the Gwadar port to Chinese for a naval base. Khyber Pakhtunkhwa was never in heart of heart with Pakistan. So if you have 3 out of 4 provinces in a rebellious mode, this country is as artificial as was the Federal Republic of Yugoslavia. Absolutely. Federal Republic, where is Federal Republic? And of course, big Balochistan is there too. So yeah. So Pakistan is undergoing an internal implosion. It is going to implode from within. Bilkul. See, I was meeting the Sindh community from Pakistan who moved to Bharat, and the story they say is unbelievable. How they have been chased out, tortured, and no human right guys talk about it. Yeah. These are Sindhi Hindus. Yeah, that's why they don't talk about it. If they are Abrahamic gang, so they will talk about them, right? But anyway, so having said that, that's a very very thank you for coming in and sharing. And I would like to take your last opinion, okay, for the people who are going for voting. Okay, one more phase is remaining in Bharat for voting. Okay, and the percentages keep on going down, and you please say the people it is scoring hard there. Why they have to still get out and vote? क्या करना चाहिए? आप जरा सलाह दें उनको. देखिए, और क्यों? एक लोकतंत्र में लोगों की जो चाह है वो हर 5 साल आती है चुनाव के समय पे. अगर आप अपना राष्ट्र धर्म नहीं निभाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा. यह बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र में अपना मतदान करें. अपने मतदान के अधिकार को आप कूड़े के डब्बे में नहीं डालें, क्योंकि अगर आप नहीं जाते तो कोई और जाके मतदान करेगा और उसके परिणाम जो हो सकते हैं वो बहुत भविष्य में भयंकर हो सकते हैं. And how do you think their vote will influence POK? या लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, POK लेना है, शारदा पीठ लेना है, इनका वोट कैसा? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर. देखिए, अगर एक सशक्त सरकार आती है 2024 के चुनाव के परिणाम के पश्चात, सशक्त सरकार आपके अधिकारों को आपको दिलाएगी. There is a saying, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते. All these academic discussions can only be held in a nation that is jealously guarded by arms. Absolutely. So all these WhatsApp discussions don't mean anything if you become slave to somebody else. Absolutely. So you have to be strong, and you have to have a strong government. You know what happened when we had a phase of weak governments? Or selfish ones, yeah. We had a number of very weak governments
that were based on coalitions. In fact, in one of those governments, took certain decisions that were very, very inimical to national interests under Gujarat Doctrine. So it is very important that you go out and vote for a strong government, and vote for a government that will take your long-term interest and your long-term freedom secured, so that no enemy cast their evil eyes on the nation. Absolutely. Absolutely. Very, very well said, Dr. Saab. Like PM Modi says, friends, never forget. पहले मतदान मतदान फिर जलपान. ओके, यही अपना ये है, घोषणा है, जैसा प्रधानमंत्री ने बोले. You can talk all about POK, this, that, but you had to lift your thing and go and vote there. There is otherwise nothing going. Yes. Okay. Thank you, Dr. Saab, for joining us and shedding light on POK. It means a lot. हमें समझने के लिए बहुत बहुत उपयोग रहा. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए बहुत बहुत आभार. और दोबारा बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे. आपका आभारी मैं हूं, क्योंकि आपने मुझे अपना मंच दिया और मंच में मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया. उसके लिए मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम.